चलो अब ध्यान दो। ओके, असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या समझना है हमें कि लेट्स से फॉर एग्जांपल we want to buy an air conditioner. ओके, तो हम गए क्रोमा में, सिलेक्ट किया केसी। ओके, जैसे ये केसी यहाँ पे है मित्सुबिशी हेवी। ओके, गए दुकान में, हमने कहा कमर्शियल यूज हेवी एसी चाहिए। ओके सर ये है। ओके, मेरा फेवरेट ब्रांड है मित्सुबिशी। मैं पूछा क्या प्राइस है, तो बोले 80,000, 2.2 टन। बोला ओके, पैकेट, ठीक है। उसने पैक करके रख दिया मेरे सामने, ये ले जाओ सर, पैसे दे दो। नाउ कैन आई टेक दिस एसी इन माय कार? नो, इट्स अ बिग यूनिट, ये इंटरनल है और एक्सटर्नल है, देयर नीड 2 पीपल एटलीस्ट टू कैरी दिस। तो मैंने ऐसा कहा कि नहीं, मैं अभी डिलीवरी नहीं दूंगा, ऐसे ले लो, पर ये मेरे क्लास पे पहुंचना है। ओके, तो दिस पर्सन साइड ओके सर पहुंचा देंगे, पर उसका एक्स्ट्रा लगेगा कार्टेज 1,000 रुपीज। ओके, आई विल पे 1,000 रुपीज, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैरी दिस। तो वहां से वो आ गया मशीन। अब एक टेम्पो वाला लेके आया और उसका एज था 60-65 ईयर्स का। तो मशीन लेके आ गया, फिर नीचे से फोन करता है, तुम्हारी मशीन आई गई है, आइए नहीं जाओ, कैसे नहीं जाओ। This outer unit would be around 50 kg plus. Okay, this unit would be around 15 kg. I cannot carry it on my shoulders and bring it over here. तो मैं उसको ऐसा बोलता हूँ कि અહીંયા કાકા कोई मानसो છે नहीं, लिफ्ट पर नहीं, तो તમે માણસ બોલતી અને ઉપર સુધી પહોંચાડો। વિકેટ ઓકે, પણ માણસ લાવીશ તો અલગ એક્સ્ટ્રા પૈસા આપવા પડશે। I said okay, तो उसने बोला बीजा 300 रुपया थશે लेबर। ओके, टू ब्रिंग दिस मशीन ओवर हियर। अब मशीन आ गया यहाँ पे, तो क्या मैं तुरंत ओपन करके चालू कर सकता हूँ यूज करना? इज इट प्लग एंड प्ले? नो, इट इज नॉट प्लग एंड प्ले, इट हैज टू बी इंस्टॉलेशन वाले को बुलाया। उसने बोला कि मैं इंस्टॉल कर दूंगा, और उसका अलग खर्चा होगा 1700 इंस्टॉलेशन। नाउ इंस्टॉल कर दिया इधर इंटरनल यूनिट, बाहर एक्सटर्नल यूनिट। कैन आई से नाउ, सुनना हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट, कैन आई से नाउ दिस असेट इज रेडी फॉर यूज। नाउ द मोमेंट I will press this remote control button to switch on, so it is ready for use. Understood? This word समझना है, what is the meaning of ready for use? तो मेरा asset हो गया ready for use। अब what is the cost of this asset? 80,000 or 80,000 plus all these charges? 80,000 plus all these charges। कोई पूछेगा कितने में पड़ा ये मशीन, तो मैं बोलूंगा कितना है 22,000, 3,000। मैं बोलूंगा 83 is the cost of the machine। Understood this? Now books of accounts में कौन सा एंट्री पास करूंगा? मैं एंट्री पास करूंगा एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट फॉर 80,000, एंड ये सब अगर कैश में दिया है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 53,000। अंडरस्टूड दिस? तो एसी का वैल्यू कितना हुआ, 80,000 या 83?
83,000. So what new we are understanding over here, that all these expenses, these are all expenses. If I will not incur this, will I be able to use this machine? So any expenses incurred to bring an asset in a stage when it is ready for use, such expenses are to be added to the cost of the asset. समझ में हमें क्या बोल गया इंग्लिश में कि अगर हमने कोई भी असेट खरीदा तो उस असेट का एक वैल्यू दिया और उसको रेडी फॉर यूज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसको भी हम गिनेंगे एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट असेट। इज दिस क्लियर? नॉर्मली जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स, तो हम कार्टेज के लिए क्या एंट्री पास करते हैं? कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। लेबर के लिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। पर यहाँ पे वी आर बाइंग एन असेट। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको ऐड करते हैं असेट में? बिकॉज जब तक ये असेट रहेगा तब तक ये एक्सपेंस का भी बेनिफिट रहेगा। So can I say they all become part of the same asset cost? पता चल गया तुम्हें ये? All of you understood this? Okay, one more example. I want to buy a property. Say 3,000 square feet. 3,000 square feet. Okay. तो हम लोग गए वासना फाइलिंग बिजनेस स्टार्टेड लास्ट ईयर। ओके, सो वी वर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी ओवर देयर। फिर हमें एक आइडियल लोकेशन मिला ब्राइट स्कूल के बाजू। गुड लोकेशन फॉर अस, बाजू में ही स्कूल है, बाजू में ही हमारा सेंटर, सो वी कैन गेट गुड माइलेज ओवर देयर बिकॉज सारे रेसिडेंसेस वहां पे ही है। तो हमने प्रॉपर्टी ढूंढना चालू किया, ब्रोकर को मिले, ब्रोकर ने बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखाया पर हमको प्रॉपर्टी अच्छा लगा। तो हमने बिल्डर को पूछा कि व्हाट्स द कॉस्ट। तो बिल्डर से 1.5 CR। ओके, 1.5 CR। तो वी सेड ओके, चलो डन, हमको ये प्रॉपर्टी खरीद लेना है। पर 1.5 CR मैंने बिल्डर को पे कर दिया, तो बिल्डर ने मेरे को चाबी दे दिया, पर एम आई द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? एम आई द लीगल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी? नो, बिकॉज प्रॉपर्टी इज नॉट येट रजिस्टर्ड ऑन माई। तो बिल्डर को मुझे पे करना पड़ा फॉर स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन another 10 lakhs. Okay? Okay? You understood this? But there was a broker also involved. Broker ने कहा मेरा brokerage देना पड़ेगा कि नहीं brokerage? So I paid brokerage of 2 lakhs. ठीक है? अब what is the total cost of property now for me? 1.5, 1.62 CR. You understood this? तो कोई बोलेगा कि ये मकान कितने में लिया, तो क्या मैं उसका बेस प्राइस बोलूंगा या टोटल कॉस्ट बोलूंगा? Because if I will not do this, will I get the legal right of ownership of this property? तो जब तक मैं ये बिल्डिंग यूज करूंगा मुझे ये एक्सपेंसेस का भी बेनिफिट मिलेगा। दैट इज व्हाई these expenses are added to the cost of the asset. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से मैं करूंगा? 1,62,00,000। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया सबको? ओके, वन मोर एग्जाम्पल। vehicle, X showroom, X showroom, okay,
एक्स तो बहुत होते हैं, ये एक्स शोरूम है. Now what is एक्स शोरूम? Showroom price of a vehicle. Okay. Say for example, I went to buy a two-wheeler. Okay. Say some Activa or something. Okay. So एक showroom उसका है say 80,000. Okay. Price list है एक showroom is 80,000. तो मैंने 80,000 निकाल के दे दी. ये पकड़ कैश 80,000. चल vehicle दे दे मेरे को. तो ये लो सर चाबी. But can I legally drive this vehicle? No, because again the vehicle is not registered in my name. So what I have to pay? I have to pay RTO tax, then I have to pay road tax, then I have to pay VMC tax, then I have to pay insurance. है कि नहीं? अब जब तक ये पे नहीं करूँगा, can I legally drive the vehicle? No. So इसका मैंने पे किया 5,000. So what's the total cost of my asset now? 85,000. This is known as on the road price. OTR यानी on the road. Understood this? मुझे एक फैक्ट्री बनाना है, a manufacturing plant to convert some raw material into finished goods. आलू डालो और वेफर निकालो, सोना नहीं वेफर. ओके, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था. ओके, let's put potatoes and what you get is packed wafers. ऐसे क्रांति होते. Okay, the potatoes go in, then they are cleaned, they are peeled, they are chipped, and then they are fried, and then they are packed, and then they are ready for disposal. Understood this? अब ये पूरा मशीन है. It will have a length of say 100 meters or 80 meters. तो क्या ये 80 मीटर के साइज का प्लांट या फैक्ट्री मशीन क्या एक साथ आया था कि इसको असेंबल करना पड़ा होगा? असेंबल करना पड़ा होगा. तो वो अलग अलग पार्ट्स मंगाए, उनको असेंबल यानी इंस्टॉल किया, इरेक्ट किया, तब जाके में मेरा मशीनरी कंप्लीट हुआ. तो ये जितने भी कॉस्ट इनकर हुए टू मेक दैट मशीन रेडी फॉर यूज, दैट विल ऑल बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन. समझ में आ गया? तुमने एक विंडोज लैपटॉप खरीदा, ओके, विंडोज लैपटॉप, और उसमें विंडोज का लाइसेंस वर्जन था नहीं. तो यू कैन नॉट हैव अ लैपटॉप विदाउट अ ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप यू नो दिस. एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए ना. एप्पल का कुछ भी नहीं आता, उसके साथ इनबिल्ट आता है. बट ऐसे भी लैपटॉप है मार्केट में जहां पे विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल है नहीं. तो फिर तुम्हें यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विंडोज इंस्टॉल कराना पड़ेगा. तो लैपटॉप लिया 60,000 का, विंडोज का लाइसेंस सॉफ्टवेयर 10,000. So what will be the total cost of that laptop? 20,000. You understood this concept? तो कोई भी asset लिया और कोई भी खर्चा किया to make that asset ready for use, that is to be considered to be part of the cost of the. Is this clear? Concept पता चल गया सबको? Okay. चल ये लिखो examples and then we go to this format and stuff. किसी को कोई डाउट है? हाँ, फॉर्मेट में लखी लो ने. दैट्स राइट. इट्स ओके. हाँ, ऐसा नहीं. अलग किन लखो, जोड़े लखो. एक पे लेटर एंट्री लिखेंगे हम इसका. तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश. कुछ कैश में पे किया है तो कैश, और चेक से पे किया है तो बैंक. अभी नेक्स्ट वीक में तुम्हारा अकाउंट का टेस्ट रखने वाला हूँ फिर से. ये वीक में ही था, नेक्स्ट वीक है. रेडी रहना.
journal entry as asana, and something from previous chapters also. I'm very harsh on students. Admission के टाइम पे very goody. But then I'm very harsh. एक बार स्टूडेंट आ गया, फीस भर लिया, फिर असली रंग दिखाऊंगा, फिर मैं ना छोड़ूंगा. But I'm just your friendly neighborhood Spider-Man. उसके बाद वो कौन सा हाथ में जेम वाला Thanos, then I will become Thanos. नहीं, थोड़ा तो मेरी तरफ से लोड रहेगा ही तुमको. Be prepared. Yes, I will not spare you. मुझे चाहिए. I have a purpose. The best result आना चाहिए हर एक स्टूडेंट. Result is only going to make you in your life. तो पर्सेंटेज जे पण अमाउंट आहे ना, ब्रोकरेज आहे ते बेस प्राइस पर्यंत 2% लिए 1% लिए પછી નેગોશિએટ કે ના આટલી બધી તો હોય. हाँ, it's always on the base. Again, we have another interesting example. We take one thing at a time. When you erase अच्छा एग्जाम पेपर में ना व्हाइट कलर अलाउड नहीं है यूज करना. तुमने यूज किया ना, अलाउड नहीं. हाँ, तो वो हैबिट मत रखो. It tantamount to cheating. Don't do it. बंद कर दो, ये भी बंद, वो भी बंद, दोनों बंद. ओके, कोई बात नहीं, ये चल रहा. 80,000 रुपए का एसी है. I was at the okay. Maybe electricity they was from coal. They are very freezing. These are very. Shut. अरे बाप रे. कहाँ से इतने दिन? गोवा. लगी रहा है तुम्हारा चेहरा देख के. अब आगे वापस और पहले ही दिन आए क्लास में भी बोल दिया है ना. ऐसा ही लगा था तुम्हें बोल. आज ही देखा था तुम्हारी बहन का इंटरव्यू. रिजल्ट आया था तब लगा 94%. peer pressure. समझेगा. चलो તમારા માઇન્ડમાં કોઈ एग्जांपल છે कि आओ फिर यू कैन कोरिलेट. तो मैंने बताया तो भी सोच सकते हैं. मशीनरी तो आई टोल्ड यू ब्रो. तो मेरा ही दिमाग लगा तो वैसे मशीनरी. टीवी ओके. इलेक्ट्रॉनिक्स फिर शेयर्स. ओके शेयर्स. अगर आप तुम्हें शेयर खरीदना है तो तुम्हें किसके पास जाना पड़ता है? ब्रोकर के पास. यू कैन नॉट डायरेक्टली बाई शेयर फ्रॉम अ कंपनी कि मैं कंपनी में गया और मैंने बोला चलो शेयर दे दो. ऐसा नहीं होता है. शेयर्स के लिए देयर इज एक्सचेंज. एनएससी बीएफसी ओके. वो लोग अपॉइंट करते हैं ब्रोकर्स एंड थ्रू ब्रोकर्स ओनली यू कैन बाई शेयर. से फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई डायरेक्ट ओके या शेयर खान ओके. ऐसे अलग अलग ब्रोकर्स है ओके. या एचडीएफसी सिक्योरिटीज. तो मैं वहां पे मेरा अकाउंट खोलूंगा.
फिर वहां पे मेरे पैसे डिपॉजिट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि मैंने 10 शेयर रिलायंस के खरीद लो, तो क्या प्राइस है? बोले 2,000 रुपए का एक शेयर। 2,000 तो नहीं, आई थिंक 1,300 के आसपास है रिलायंस। 1,300 रुपए का एक शेयर, तो 1,300 इंटू 10, 30,000। मैं बोला ये ले लो 13,000 शेयर दे दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। बोले नहीं, आपको पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज, और गवर्नमेंट कोई भी चीज में हमको छोड़ता नहीं है, वहां पे भी टैक्स है। इसको पता है कौन सा टैक्स है ऑन बाइंग शेयर्स? ये STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो भरूंगा, उसके बाद ही शेयर्स मेरे अकाउंट में मेरे नाम पे ट्रांसफर होंगे। तो उसके मान लो पर शेयर 5 रुपीज कॉस्ट है, सो मेरा कॉस्ट ऑफ बाइंग रिलायंस शेयर पर शेयर कितना हुआ? 1305। अंडरस्टूड दिस? ओके, नॉर्मल ये ब्रोकरेज को क्या कहते हैं? एक्सपेंस। तो वी राइट व्हाट? ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। दिस इज फॉर ब्रोकरेज ऑफ गुड्स, बट इट इज ब्रोकरेज फॉर असेट। समझ में आ रहा है ना दोनों का डिफरेंस? So if a transaction is given, paid brokerage 3,000. So what entry will pass? Brokerage account debit to cash account credit. But if a transaction is given, if purchase share and paid brokerage, तो brokerage account debit कहीं पे आएगा ही। समझ में आ गया ये? अच्छा, मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदा, सेकेंड हैंड व्हीकल, और वो व्हीकल को रेडी फॉर यूज करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, तो मैं इसको मेरा रेगुलर एक्सपेंस गिनूंगा या एक्सपेंस ऑन असेट गिनूंगा? एक्सपेंस ऑन असेट। समझ में आया? तो ऐसे सब ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। हाँ, फर्नीचर ऑल्सो वी कैन से कि फर्नीचर वी गॉट इट मेड एट अवर प्लेस, सो वी परचेज plywood, Fevicol, nails, okay, then laminates, okay, then some attachments जैसे कि stopper है ना, ये latch है, okay, और फिर I paid labor, फिर बना हमारा furniture. For example, these benches, they are a classic example. Fabrication वाला अलग है और ऊपर के जो पाटिया बना है वो अलग है। तुमने देखा इसमें लैमिनेट वाला है, ये फैब्रिकेटर ने नहीं पता, ये फर्नीचर वाले ने पता। So then what I do? If someone says what's the cost of this bench, फिर ये लाइनिंग वाला आया, ये गादी नहीं लगाई हमने, तो वो लाइनिंग वाला है। So then I will find out what is the cost of this bench. समझ में आया? ओके, चल आगे बढ़ते। कौन सा सम करेंगे? और एक्स्ट्रा मटेरियल लाए हो ना तुम लोग? चलो निकालो। Oh my God, इधर भी नहीं है। हाँ वही वहाँ पे बैंकिंग है। हाँ ये 8.60 मिल गया। सॉरी, टेक्स्ट बुक पे आ जाओ। 8.60 वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा भी ट्रांजेक्शन है, वेरी इंटरेस्टिंग। बना लिया है फॉर्मेट? हेडिंग लिख दो, जर्नल एंट्रीज ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें पैकेज तो डेट्स है। फर्स्ट, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। चलो मुझे इसका आंसर देना दो। पेड रिपेयरिंग, मैंने क्या कहा था? ट्रांजैक्शन पढ़ना, फिर समझना, सोचना, फिर आंसर देना। आंसर देने के बाद मत सोचना। लुक बिफोर यू लीव, नॉट लीव, फॉल एंड देन लुक। जनरली ऐसा ही होता है। बोलो। Repairing charges account debit to cash account. But why not machinery? Because they are not we don't really ready to use. Because it is a existing machinery. अब ये AC है, चौका ब्लॉक हो गया, तो मैंने किसी को बोला है कि भाई इसको क्लीन करो, सर्विस करो। व्हीकल है तो सर्विस में दिया, तो वो तो रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एग्जिस्टिंग। ओके, लिखो रिपेयर, रिपेयर expense account debit to cash account credit 2026 April 1. To bank नहीं, to cash. Not cash. Okay. Lucky. Being paid, repair, expense. That's right. Very interesting second one. Now what's the entry for second one? Purchase a new machinery. Machinery account debit to cash account credit. लिखो फटाफट। So next लिखो। You can do this on your own. लिखो। Now third में freight and carriage है, तो on purchase machinery. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये है ना परचेज मशीनरी पे फ्रेट एंड कैरेज, ये परचेज मशीनरी पे फ्रेट और कैरेज देना पड़ेगा।